All right, perfect. So, good evening to all the attendees, to all the students and the community members present here. We are about to begin the session. Before we begin with the opening keynote, I would like to mention some guidelines that you need to follow throughout the event. First of all, since it's a virtual event, so your people should maintain a little decorum. You are feel free to open up your videos throughout the session while Mr. Kuwar Kapoor is, giving his talk, giving his presentation. But please keep yourself on mute. If you have any questions, feel free to utilize the chat section for all the queries and the questions. But yeah, we will be having a dedicated Q&A about this particular session in the end, so your patience would be really appreciated. Also, if you have any friends who would like to be, interested to join this particular session around CNNs and who are, very much passionate about getting into machine learning stuff, so feel free to invite them. And yeah, I hope you have a great learning time today. So now just let's start. So good evening, everyone. We are thrilled to have you all today, and we hope that you have a great time into exploration into the fascinating domain of artificial intelligence and machine learning. But before we actually begin today's event around CNNs, I would like to thank our fellow GDSCs who made this collaboration possible. So, our heartfelt thanks to all the GDSCs who have collaborated us for this event. I'm thanking GDSC of IIMT College of Engineering, Greater Noida, Dr. BC Roy Engineering College of Durgapur, Asansol Engineering College of Asansol, ABES Institute of Technology from Ghaziabad, Purnima College of Engineering, Jaipur, and KPR Institute of Engineering and Technology, Coimbatore, for making this event collaboration possible. We are truly grateful for all the support that you have provided us. And we also expect that you have a great time in this event as well. We are looking forward for many more collaborations in future. So now, without any further ado, let's dive into today's event that is exploring the neural frontiers, an elegant introduction to convolutional neural networks. And the speaker for today's session is Mr. Kuwar Kapoor. And you must have already, gone through all the posters and all the messages that we have circulated. So you already know that he is very proficient into this domain, and he's also a MLE at Skylark Drones. Uh, so yeah, over to you, sir. You can go ahead with your presentation. We are really excited for today's session. Hey, hi, Kushi. How are you? Thanks for the nice introduction. Hey, hi, everyone. All right, we'll begin into this presentation or this session. First, I would like to say something. Okay, so at any point of the moment, like if you feel you have some doubt regarding this particular topic I'm trying to make you understand, just write that in the chat box as Kushi mentioned. Okay, and uh, like, hey, hi Kushi, anyone from the management team here, or you are just handling everything right now? Pardon, sir? You are handling everything for this meeting or Yeah, this yeah, session. yeah. I'm the host for this event, but you have the options for presentation sharing, I guess. Yeah. That is cool. I just wanted to say, if you feel there are a lot of doubts coming around a certain topic, just stop me here, and we'll take up those doubts and we'll move forward when we'll be able to understand them, right? Because see, CNNs are all about understanding a certain pipeline. Machine learning is all about a pipeline that someone has developed for this for their custom problem that they are trying to solve. Okay, so we'll be diving into that CNN and machine learning and neural network. What all the gist is about. Okay, and one thing I would like to say. See, CNN is not outdated. It's that type of technology that's still being used in multiple of the softwares or the stuff that you use. Okay, so you use stable diffusion or you use DALI 2 or Chat GPT, the multimodality one, right? So in all of these, CNN are still being used, right? So I think it would be a good chance for you to learn more about them through this session. Okay, so we will get started. Just give me a moment and I'll share my screen.
Okay. Yeah. So I have shared my screen. Are you guys able to see this? Yeah, the Okay. screen is being shared. Sure, sure. Perfect, perfect. Okay. So let's dive right into it. Okay. And as I said, at any point of the movement you feel you have some doubt, just write it in the comment and we'll take it up step by step. All right. Okay. So guys, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो CNN है. Not the first one, the latter one. Okay, the convolutional neural networks. CNN is basically a type of neural networks that we work with, use with particular grid data. And grid data क्या होता है? Grid data होता है image data. Okay. CNN को और भी चीजों के लिए हम यूज कर सकते हैं for other stuff as well, for language, for audio, but mostly all the papers or all the research that we have done, it shows that CNN is basically very good if you use it with the image data, particularly the grid data that I'm referring to right now. Okay, so yeah, today is all about intro to CNNs. Okay, and what I want you to get this from this particular session, or what I'm trying to make you understand is just get to know more about CNN. Okay, this is not a session where I'll be completely detailing about every each and every detail of the machine learning pipeline or the convolutional neural networks, because see, it won't do this 1 hour talk or this 1 hour PPT won't do justice to that particular topic, because learning is a very vast field, to be honest. Okay, so let's uh, yeah. So my main motive, आज का जो मेरा मेन मोटिव है ना, तुम लोग अपने दोस्तों के पास जाओ और उनको ये कह सको कि हाँ, आई नो CNN, मुझे CNN पता है, मैं CNN के साथ कोड कर सकता हूँ, मैं CNN बना सकता हूँ. Okay, so the main motive for me to give this talk is all about this. All right, yeah, okay. So yeah, थोड़ा सा मेरे बारे में, a bit about me. तो my tech journey started from machine learning and artificial intelligence. मैं C++ पे काम करता था पहले, but I shifted domains because I liked machine learning. I wanted to get experience with it. I wanted to work in it. All right. Currently, I'm working as a machine learning engineer at Skylark Drones, where I work with unmanned aerial vehicles, and I try to provide them with some sort of AI and some sort of artificial computation and these kinds of things. Other than that, I'm also a research intern in Carnegie Mellon University, where I'm working in one of the labs under Professor Shu, right? So I'm working under him, and we are working on a paper, and that will soon be out. Sure. And other than that, I've done a lot of experiences as well, past experiences. And in one of those, I have been a deep learning intern at NVIDIA. Okay, I've worked in IIT as well under a startup, and I've also been an MLS fellow. Okay, so yeah, I've done a lot of things. I've explored myself in my college days. I've worked in a lot of things. I'll say I've handled product management. I've handled ML ops, DevOps. I've worked in the machine learning part. I've worked in the full stack part. I've worked in a lot of tech stack. I would say that. Yeah, with that, I also love to sing. I have a knack for music. I really love that. Whenever I get free time, I like to pursue that as well. So yeah, this was about me, and yeah, moving on. See, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन रहेगी, इट विल बी अराउंड 3 टॉपिक्स. ओके, CNN क्या होते हैं, CNN लर्न क्या करते हैं, essentially. See, if you are working with an algorithm, right, the entire purpose of us developing that algorithm is what does it learn, what CNN is essentially trying to do. Okay, and third is application of CNN, because it doesn't matter how efficient your algorithm is, doesn't matter how fast your algorithm is, if it's not being used in the real world, if it doesn't have any sort of applications, that then it's it doesn't matter. Still, but applications of CNNs are a lot, and still being used in the corporate world, in the research world, in the academic world, like a lot of places. Okay, moving on. So what are CNNs?
But before that, I would like to make you understand what is a neural network. Neural network क्या होता है? See, convolutional neural network. It's a type of neural network, right? It's not a neural network, but it's a type of neural network. So neural network होता क्या है? See, if you can see these images, right? This is very simple neural networks. But if you see these images, right? Neural network is nothing, but it's an intercollection of nodes, right? Intercollection of nodes. अब nodes क्या होते हैं? So see these cute little circles. These are called nodes, or we can call it neurons, राइट जैसे हमारे दिमाग में होते हैं साइनॉप्सिस न्यूरॉन्स intercollecting with each other, brain pulses is running around it. Okay, so that is what a neural network is. Neural network is nothing but intercollection of nodes that interact with each other. And why do they interact with each other? To find certain pattern or trend in our data, and using that pattern to work around and making a certain sort of prediction. ओके सो दैट मशीन लर्निंग के बारे में जब हम बात करते हैं यही बोलते हैं ना लोग कि यार डेटा पास किया, मॉडल ने पैटर्न ढूंढा एंड मैंने प्रिडिक्शन निकाली. बोलने के लिए दीज आर वेरी थ्री इजी स्टेप्स, बट अराउंड दीज थ्री स्टेप्स द होल मशीन लर्निंग लाइज. Okay, so that is what a neural network is also. It's nothing but an intercollection of nodes that are interacting with each other, okay, to generate a prediction. Okay, so that is what a neural network is. And CNN is a type of neural network. Okay, so अगर यहाँ पे ये किसी को समझ नहीं आया, ठीक है, तो let's understand this through a picture. Okay, so okay, how neural networks work? I know a guy who knows a guy. Okay, so see, it's like interconnection of network. क्लास में कोई असाइनमेंट मिलता है तुम लोगों को, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कोई असाइनमेंट नहीं करते, मुझे भी पता है, मैं भी नहीं करता था. ठीक है, मेरे साथ जो साथ में वाला बंदा बैठता था, मैं उससे असाइनमेंट लेता था, उसका कॉपी करता था. ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एंटायरली. सी आई नो अ गाय हु नोज अ गाय, सो दैट इज व्हाट neural networks also do. They work like that, right? Weight sharing, parameter sharing, all these concepts happen in that particular neural network, or whatever the algorithm you're working with. Okay, so yeah. Now, I would like to explain ki how a neural network is working through a problem statement. Okay, so what's the problem statement right now? Is buying a house a good investment? अगर मुझे मेरी सैलरी और मेरा हाउस प्राइस पता है. ओके, सो सैलरी और हाउस प्राइस क्या है? इट्स माय डेटा पॉइंट्स. It's the data I have. Okay, so yeah, it's a data I have. Okay, and yeah, so let's move into this. अगर मैंने ये दो चीजें, दिस टू डेटा पॉइंट्स दैट आई हैव, इफ आई पास इनटू द मॉडल. अभी मॉडल क्या है यार, मुझे ये भी नहीं पता मॉडल क्या है. सी राइट नाउ, जस्ट इमेजिन दिस मॉडल एज अ ब्लैक बॉक्स. Okay, some things go from some things are the input of this. Salary and the price are some sort of input for this black box model. ठीक है, अगर input है तो of course we'll have some output, right? Okay, we'll see that in the further slides. Yeah, see this is the output. After considering the salary and the house price, I can detect, yeah, this is a good investment for me at this point of moment or not, right? We can say that. All right. Yeah. So हमारा aim क्या है? To train a model and to tell if it's a good investment based on the house price and salary. Okay. Yeah. So basically, we have four steps that we work with in our whole machine learning pipeline. Okay. One is collect your data. Okay, that is the very essential step that we people do. Most of you people have used chat gpt. अच्छा, ये पता chat gpt किस डेटा पे बना है? ठीक है, initially the sources for the particular chat gpt that we are using right now were, Twitter data, right? Twitter ka data, and right now it's called X, right? Twitter's data, it was that the conversation people have over on that particular platform, or the image, or the sharing path, whatever they do on that particular platform, it acted as the data for initial GPT models. Okay, so step one is to collect your data. If you want to work in machine learning, this is a very essential step. Okay, step two is train the model given data. Okay,
This is a very vague statement. Okay, I would like to clarify that between these two steps, there are a lot of steps involved. Okay, that are pre-processing. Okay, working your data according to the perfect model, not perfect model, but the algorithm that you're trying to work with. Right. See, if I say model, under that particular word, there are a lot of neural networks or a lot of models that you can use using any of the framework that you have learned, or you can make it from scratch as well. Okay, so moving on, step 3 is हमने मॉडल ट्रेन कर लिया, हमारे पास डेटा पॉइंट्स कलेक्ट हो गए, अब इसका करें क्या? हमारे पास वेट्स आ गए। वेट्स क्या होते हैं? मॉडल ने जो भी ट्रेन किया, it provides you some sort of compressive file and you can use that for inference or evaluation. What is inference? Inference is nothing. आप किसी भी चीज को, लेट्स से मैंने एक फोटो खींची, आई हैव अ इमेज डिटेक्शन मॉडल, और लेट्स से इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल, मैंने किसी भी चीज की एक फोटो खींची, आई कैप्चर्ड द फोटो, एंड एट दैट इंस्टेंस एंड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई हैव द रिजल्ट। ओके, दैट इज सर्टेनली इन्फरेंस। किसी भी चीज का रिजल्ट गैदर करना, दैट इज इन्फरेंस in terms of machine learning. Okay, okay, yeah, so see, we had this black box, right? इतना यहां तक समझ आ रहा है? किसी को सबको समझ आ रहा है, राइट? अगर नहीं समझ आ रहा है, गाइस, दैट्स व्हाट आई सेड, कैन मैसेज इन द चैट एंड वी कैन टेक योर डाउट्स. ओके, okay, moving forward, what's the model, what's the black box? So this is what essentially a neural network looks from inside. Okay, अभी ये बहुत वेग सा लग रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा कहाँ कौन सी लाइन जा रही है, but remember that what I said about a neural network, everything is interconnected to each other. Okay, so everything is interconnected to each other and we have an output from it, right? That's what happening. So what does a neural network contains? It essentially contains some components that we will be talking about. First one is node, right? So a node is nothing but a simple neuron, a single neuron, and you can refer to it as a MLP as well. MLP is just nothing, it's a multi-layer perceptron, or just a neuron that some sort of computational is happening inside this small bubble or the small circle. You can say that. Second is weights. Okay. So weights यार generally क्या होते हैं? See, weights are nothing, but it's all about importance of a certain node. See, this is a very simple neural network. So right now, the weights are doesn't matter that much. But when we are working with a large neural network, see, we have heard about it कि LLM के पास 20 billion parameters हैं, 20 billion trainable parameters हैं, 7 billion trainable parameters हैं. What are those? Those are nothing but your weights and biases. Okay, and when we have that amount of in billions weights and biases, so we'll have to give some importance to some nodes. अगर हम सारे नोड्स को एक एक certain sort of importance दे देंगे, then our model will be unstable and it will not perform very well on any type of real data or real query that we're trying to pass on to it. So weights are nothing. It just provides you some sort of importance to that particular node we are working with. So W1 looks into the X1 node. W2 looks into the X1 as well, and it decides, okay, so if this node should be passed forward or not, it should be forward propagated or not. That's it. Other is your input layer. अगर मैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क के साथ वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं किसी भी मॉडल के साथ वर्क कर रहा हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कुछ इनपुट होना चाहिए हमारे पास, एंड उस इनपुट को गैदर करने के लिए क्या चाहिए? हमें इनपुट लेयर चाहिए, ठीक है? विदाउट दिस वी वोंट बी एबल टू वर्क. सेकेंड इज योर हिडन लेयर. एंड व्हाट इज दिस हिडन लेयर? हिडन लेयर क्या होती है? So hidden layer is nothing. It does computation on the sort of numbers that we are getting from the input layer. It performs your activation, your processing on that, and from that, it passes the output. Okay, it passes something to the output node. Right, this is the output layer we have. After the computation is done, something is passed to this output layer. अब something क्या होता है यार?
हमें तो पता नहीं समथिंग क्या होता है. So see, that will be also explained. So see, this is the something that I was talking about. Salary and price are the input layers. Input we have input data points we had. Salary and price are those. And वो something की मैं बात कर रहा था ना. So see, this is the weighted sum. See, this is the weighted sum. अगर मैंने W1 and W3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज कर दी. लेट से मैं कहता हूँ W1 0 है यहाँ पे. ओके. So X1 से जो भी डेटा आ रहा था, it will have no importance. Of course, we will only consider this price segment, and this O1 will only consider the price segment. It will not consider the salary segment. Okay, so weights are necessary for that. Weights हमें बताते हैं कि सैलरी को कंसिडर करना एंड प्राइस को कंसिडर करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? इन दिस कंटेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इट. Okay, so this is a very simple neural network, and using this we get an output. Okay, using this we get an output. So let's see, how does the training of a neural network work? Cool, right? So step one, prepare data set. अब हमारे पास एक डेटा सेट होना चाहिए जिसके पास फीचर्स हैं और टारगेट है. टारगेट क्या होता है? सी, अब हमारे पास फीचर्स तो हैं. फीचर्स क्या हो गए? सैलरी, हाउस प्राइस. टारगेट इज yes or no. If it's a good investment, that yes. If it's not a good investment, then I'll say no, it's not a good investment. You have to increase your salary, or you'll have to increase your house price, or decrease your house price on the base of that. Okay. So yeah. Step two is get predictions for the given data and training data. अब यार ट्रेनिंग की तो हमने बात ही नहीं करी, प्रिडिक्शंस तो एकदम से पहले आ गए. See, it's not like that. The entire part of training your neural network is हम रैंडम नंबर से स्टार्ट करते हैं. उन्हीं रैंडम नंबर से हमारे पास एक प्रिडिक्शन आती है. अब प्रिडिक्शन हमें पता है गलत है, बट हम ये मैसेज फॉरवर्ड कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर को और हमारे मॉडल को, बेसिकली हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को. दैट वी विल डू बाय कैलकुलेटिंग द एरर कि उसने क्या प्रिडिक्शन करी है और ग्राउंड ट्रूथ क्या था. See, it's as simple as that. Okay, so let's imagine an example. See, this entire process इसको back propagation बोलते हैं. It's called back propagation. Similar, समझ मतलब see, it's a very simple word, right? Back propagation. It means like not going forward, but going backward to understand हमने गलती कहाँ करी है, right? So let's say you're doing a division. You're doing 21 divided by 5. हमारा इनिशियल एक रिस्पॉन्स क्या होगा? 5 हो जाए 20, 1 रिमाइंडर बच गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया. ओके, बट लेट्स से you try to take a different approach to it and you don't have some sort of understanding about how division works. So you will say that I'll do 5 3 is 15, okay, and 21 minus 15 is 6. Okay, we are going in the good direction, right. And now we'll do 5 1 the 5. 6 minus 5 is 1. Remainder is correct. But the output we have got, it's 31, under the brackets is 1. So do you really think to divide 21 by 5, it will take 31 as an answer? No, exactly no. तो हमें पता कैसे चला? हमारे टीचर ने हमारी गलती बताई, हमने बैक प्रोपोगेट किया. ओके, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग हियर. सी, वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. उस रॉन्ग को हमने राइट किया, हमारा आंसर सही आया, टीचर भी हैप्पी, तुम भी हैप्पी. इट्स लाइक दैट. सो अब उनको अपडेट करने के लिए हमने क्या करना है? हमारे वेट्स जिनकी मैंने बात करी थी, जो किसी भी नोड को इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एक सर्टेन वेटेज प्रोवाइड करते हैं, विल अपडेट दोस सच दैट जो एरर आ रहा था ना हमारी प्रेडिक्शंस पे, वो रिड्यूस हो जाएगा. अब रिड्यूस कैसे होगा? वेन विल, जब हम राइट अमाउंट ऑफ वेट्स या राइट नंबर ऑफ ग्रेडियंट ढूंढ लेंगे एंड उनको उसकी जगह पे फिट कर देंगे, राइट, रिप्लेस कर देंगे पुराने वेट्स के थ्रू, फिर नया नंबर आएगा, फिर नई प्रिडिक्शन आएगी. अब जब उसको कंपेयर किया जाएगा ग्राउंड ट्रुथ से, आई एम नॉट सेइंग कि वो एकदम सही होगा, वर्स्ट भी हो सकता है यार. इट डिपेंड्स, राइट, ऑन योर वेट्स एंड बायसेस दैट यू आर सीइंग. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आइटरेटिव. इस प्रोसेस को बहुत बार चलाना पड़ता है, इस प्रोसेस को बहुत बार रन करना पड़ता है टू गेट दैट एग्जैक्ट नंबर. ठीक है, sometimes you'll be able to get that number in some iterations, but sometimes if you have a large data or if you have a complex data, you'll have to run it for a longer time to understand, to let your model understand
कि इतना कॉम्प्लेक्स क्या है इस डेटा में, टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर डेटा, टू फाइंड सर्टेन पैटर्न्स। जो हमारा शुरू से मोटिव रहा है कि न्यूरल नेटवर्क करता क्या है, पैटर्न्स ढूंढता है और कुछ नहीं करता है। पैटर्न्स ढूंढता है, उसको एक लेबल के अगेंस्ट सेट करता है कि ठीक है यार, अगर अगर मैं इस आवाज में ये पैटर्न ढूंढ पा रहा हूँ, ट्रेबल ढूंढ पा रहा हूँ बहुत ज्यादा, और बेस बहुत कम है और टोन बहुत हाई है, तो डेफिनेटली ये इस एक्टर की आवाज है। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न्स एंड यूजिंग दोज टू ट्रेन अ मॉडल। Okay, so neural network is essentially this. Machine learning is essentially this. It's nothing more. Entire machine learning models work on this practice. Okay, but अभी तो हम यार CNN पढ़ने आए थे, हम तो शुरू हो गए न्यूरल नेटवर्क पे। सी इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट कि CNN क्या है। ओके, सो आई वुड लाइक टू पॉज अ बिट एंड आई वुड लाइक टू सी इफ एनीवन हैज अ डाउट इन इट। अभी तक का जो हमने सेशन कंटिन्यू करा है, सेशन पढ़ा है, राइट, सेशन को समझा है, if anyone has a doubt in it, we can continue this. If you don't have a doubt, hmm, all right. Okay, moving forward. So, what are CNNs? See, CNN are nothing. They're convolutional neural networks, and this is a type of deep learning model designed for processing and analyzing structured grid data with a primary emphasis on image data. अब मैं प्राइमरी एम्फेसिस क्यों कह रहा हूं? सी, जब तक हमने कोई एल्गोरिथम बनाई है, सी, अगर तुम डीएसए में काम कर रहे हो, राइट, तो तुम ट्री के साथ काम कर रहे हो, बाइनरी ट्री के साथ काम कर रहे हो। इनपुट कुछ भी हो सकता है, इनपुट को मैं कैसे भी मॉडिफाई कर सकता हूं मेरी एल्गोरिथम के साथ रेगुलेट करने के लिए, बट आंसर सही आएगा या नहीं, वी डोंट नो दैट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी कि नहीं, वी डोंट नो दैट। सो इट्स ऑल अबाउट दैट पार्ट ओनली। CNN वर्क्स वेल विद द ग्रिड डेटा, बट अगर आप उसको सीक्वेंशियल डेटा भी प्रोवाइड करोगे ना, अगर आप उसको लेट्स से टैबुलर डेटा भी प्रोवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू द इनपुट पैरामीटर्स, जैसे खुशी ने अभी मेंशन किया था ना कि कुछ गाइडलाइंस हैं यार इस मीटिंग की। सो सिंपल है, मशीन लर्निंग में भी वर्क करने के लिए यू हैव टू फॉलो सम गाइडलाइंस। अनटिल और अनलेस आप उसको फॉलो कर रहे हो, डजंट मैटर आपका इनपुट क्या है, वर्क कर जाएगा, इट विल वर्क वेरी वेल, but the results, we are not sure about that. You have to experiment it out. So machine learning, the most important part working in machine learning is you'll have to be patient. Why patient? Because you'll have to run a lot of experiments to understand some parameters, to understand how this hyperparameter works, how this specific condition works, as we do in programming as well. Yeah, you guys know that. Okay. सो या, पर्पस क्या है सीएनएन का, हम सीएनएन यूज ही क्यों कर रहे हैं बेसिकली। सो फर्स्ट वुड आई वुड लाइक टू से इमेज एज एन इनपुट। अभी तक जितनी भी हमारे पास ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थी बिफोर सीएनएन, उसमें हम डायरेक्टली इमेज नहीं पास कर सकते एज एन इनपुट। हमें डायरेक्टली इमेज पास करना अलाउड ही नहीं है यार गाइस। हम सिर्फ एम्बेडिंग्स पास कर सकते हैं। एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? some sort of aggregate representation of a data in a numbers format or in an multi array format, multi-dimensional array format. Okay, image as an input. So CNNs are specifically engineered to handle image input. Right, image क्या होती है? 3D grid of pixels है हमारे पास, 3 चैनल्स होते हैं बेसिकली। अब किसी भी इमेज के साथ आप वर्क कर रहे हो, रेड ग्रीन, राइट, RGB colors, red, green and blue, 3 color channels we have. Okay, and the second one is your feature extraction. फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है? हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है, लेट्स से मेरी इमेज है, यू गाइस कैन सी माय इमेज, राइट। तो मेरी इमेज के कुछ सर्टेन फीचर्स होंगे। मेरी नाक मोटी है, मेरी नाक पतली है, मेरा फेस कहीं से प्लम्प है, कहीं से थोड़ा सा आई हैव अ बियर्ड और समथिंग इज देयर। सो आई हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ फीचर्स टू माय फेस, एंड उनको एक्सट्रैक्ट करना एंड यूजिंग दैट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ let's say face detection project, right? So that is what CNN is also helpful in, to extract those features and identify patterns, edges and texture, and
combining them to create a complex structure or to create a certain sort of complex embeddings that we can use for training as well. Okay. Third one is parameter sharing. And that is the biggest part of using a CNN is. See, when you're working with convolutional layers, they try to reduce the number of parameters you're using because how they do that? They use shared weights. What are shared weights? Let's say in your convolutional in your custom model, you have two convolutional layers. तुम्हारे पास दो कॉन्वोल्यूशनल लेयर है राइट सी अभी मैंने बताया था ना असाइनमेंट का एक एग्जांपल देके सो दैट इज व्हाट पैरामीटर शेयरिंग इज आल्सो एक कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक ने दूसरे कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक को बोला भाई तेरे पास जो भी आउटपुट आ रहा है ना तू मुझे दे दे एज एन इनपुट एंड आई यूज दैट टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट ओके सो दैट इज व्हाट पैरामीटर शेयरिंग इज ये कंप्यूटेशनली बहुत एफिशिएंट होता है एंड जब भी हम लार्ज इमेज डेटा के साथ वर्क कर रहे हैं इट हेल्प्स अस अ लॉट बेसिकली ओके सो हाँ अब ये तो हमें पता चल गया सीएनएन होते क्या है सीएनएन करते क्या है अभी हम उसका एक एग्जांपल भी देखेंगे बट सी दिस इज अ डॉग पिक्चर राइट वी नो दैट हमें ये कैसे पता है बिकॉज वी कैन सी एक इसकी नोज है in a certain manner eyes हैं ears down like a fluffy ears and all that we know that right so हम एक certain feature जान पाते हैं हमारा brain उस सेंस में trained है राइट बट एक कंप्यूटर क्या देखता है कंप्यूटर सिर्फ एक नंबर्स देखता है नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन देखता है एंड उन्हीं रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ये डिसाइड कर पाता है कि हाँ जो आने वाली इमेज है ये जो आने वाला इनपुट है यार ये तो डॉग है ठीक है अच्छा नहीं नहीं इसके ना विस्कर्स बहुत बड़े बड़े से हैं एंड हैज वेरी शार्प आईज तो ये डॉग तो नहीं लग रहा ये कैट होगी तो ठीक है सो कंप्यूटर डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर what are you seeing so CNN works on the numbers get that in your head right okay so अब CNN वर्क कैसे करते हैं सी CNN इसी इसी फॉर्मेट पे वर्क करते हैं मैंने बोला था ना पैरामीटर शेयरिंग राइट तो पैरामीटर शेयरिंग इज एसेंशियली दैट प्रीवियस न्यूरल नेटवर्क लेयर के वेट्स उठाए एक्टिवेशन लेयर से पास आउट किया एंड नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क लेयर के लिए वो एक्ट एज अ इनपुट की तरह एक्ट करेगा राइट so see that's what entirely CNN is now I would like to show you how CNN works so you can see this right so this is a very cool way to understand how convolutional neural networks work in your browser so this is a CNN explainer ठीक है अब CNN एक्सप्लेनर से हमें पता क्या करना है हम इतनी देर से बात करे जा रहे हैं कि CNN ग्रिड डेटा के साथ वर्क करता है CNN इमेज डेटा के साथ वर्क करता है लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज इट मैंने बताया था तीन चैनल्स होते हैं सी दीज आर द थ्री चैनल्स लेट्स से वी हैव दिस इनपुट ओके इनपुट इज 64 crores 3 अब ये होता क्या है सी दिस इज एन इनपुट दिस इज अ थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स ये थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स है जो किसी इमेज को रिप्रेजेंट करता है ठीक है इमेज को रिप्रेजेंट करता है 64 क्या है यहाँ पे हाइट दूसरा 64 क्या है नंबर जो दूसरा 64 है दैट इज द विड्थ ऑफ द इमेज एंड 3 इज चैनल्स 3 फॉर चैनल्स रेड ग्रीन ब्लू 3 channels that we are working with okay so see this able to see this right okay so अब यहाँ पे ऑपरेशन हो क्या रहा है कन्वोल्यूशन बेसिकली है क्या convolution is nothing but element wise element matrix multiplication right अगर हम इस कर्नल को see this is a kernel that we have अभी इसके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे कर्नल क्या होता है स्ट्राइड क्या होती है okay so let's wait a moment let me just try to make you understand that without this visualization then we'll come back onto it ठीक है okay so हमारे नेटवर्क पे कितनी लेयर्स होती हैं पहले तो इनपुट लेयर जिसके बारे में हमने अभी सीख चुके हैं ठीक है इनपुट लेयर क्या होती है वो इमेज जो इनपुट इमेज होती है ना जो सीएनएन को पास ऑन हो रही है वो समझने की कोशिश करती है ठीक है तीन चैनल्स होते हैं रेड ग्रीन ब्लू ये हम अभी देख ही चुके हैं अब बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन लेयर्स की तो कॉन्वोल्यूशन लेयर्स क्या होती है सी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स आर बेसिकली द बेस ऑफ योर सीएनएन ठीक है because they contain kernels and filters okay kernels are your weights initializer किसी भी चीज को समझने के लिए जो
एक कर्नल होवर कर रहा था ऑन द टॉप ऑफ योर इमेज दैट हैज सम रैंडम वेट्स. यूजिंग दोज वेट्स आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस इमेज के फीचर्स क्या हैं. फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं यूजिंग दैट पर्टिकुलर कर्नल. ओके. एंड ठीक है, ये चीज मुझे समझ आ गई. बट किसी ने यहाँ पे नोटिस किया कि यार मेरी जो शेप थी स्टार्टिंग में दैट वाज 64,64,3, बट आगे जाके वो 62 हो गई. अब 10 कैसे हो गई? डोंट वरी अबाउट इट, वी आर हियर टू सॉल्व दैट. तो 10 इसलिए हो गई बिकॉज इफ यू काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऑलराइट, दिस इज 10th पार्ट. अब ये 10 क्यों है? 10 इज द नंबर ऑफ फिल्टर्स दैट वी हैव यूज्ड. अब फिल्टर और कर्नल्स में कंफ्यूज मत करना. एक फिल्टर जो होता है कलेक्शन ऑफ कर्नल होता है. जितने भी हमारे पास चैनल होंगे उतने ही कर्नल्स बनेंगे. कर्नल्स कुछ नहीं होते. कर्नल हवर करता है हमारी इमेज के ऊपर. एलिमेंट वाइज एलिमेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की जाती है और फीचर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. उसी फीचर को पास ऑन किया जाता है थ्रू मल्टीपल लेयर्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या लेयर्स होती हैं. लेयर से पास ऑन किया, एक एम्बेडिंग हमारे पास आई. उस एम्बेडिंग को हमने डिनोट कर दिया. हाँ, दिस इज दिस इज अ लेबल बोर्ड और दिस इज अ लाइव बोर्ड, वट एवर इट इज. देन विल ट्रेन द होल सेक्शन. उसको ट्रेनिंग करने के बाद ट्रेन करने का एक बेसिक एंड टू एंड पर्पस सिर्फ यही है कि हम एक ऐसा मॉडल तैयार कर सके जो ये सारी चीज ऑटोमेट कर सके. राइट. सो द एंटायर purpose of your CNN is to create some sort of model, right? That assigns a label to some embedding. Okay. Yeah. So after this मैंने बात करी थी. See, this is the convolution happening. ये कर्नल है. कर्नल के some sort of weights होते हैं. ठीक है. अब ये परफॉर्म कर रहा है इस सेंस में. And using those weights and using this matrix wise, matrix multiplication, element wise element, matrix multiplication, I am able to get some sort of output from this. So see, doesn't this looks like a feature map? हम पता कर सकते हैं एजेस के थ्रू या फिर टेक्सचर के थ्रू कि हाँ यार दिस लुक्स लाइक अ कॉफी कप. दिस लुक्स लाइक अ कॉफी कप एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड हाँ कि कॉफी कप ऐसा ही दिखता होगा. ठीक है. एलिमेंट वाइज सम एक परफॉर्म होता है and a bias is added. Bias एक offset होता है यार, just to shift your data from the origin. Just get that. Okay. अब हमारे पास ना बहुत सारे इनपुट पैरामीटर्स होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स. इनपुट साइज कुछ नहीं है, 7x7 का मेरे पास एक मैट्रिक्स है लेट से. एंड कर्नल साइज में 3 रख देता हूँ बिकॉज हम 3x3 के साथ ही वर्क कर रहे थे. ठीक है. स्ट्राइड क्या होती है? स्ट्राइड मैंने अभी 1 रखी हुई है. सो इफ यू सी, ये एक ब्लॉक बाय एक ब्लॉक ही मूव करेगा. अगर मैं इसकी स्ट्राइड 2 कर दूं तो ये 2 ब्लॉक्स को स्किप करेगा फिर मूव करेगा. स्ट्राइड बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ती रहेगी. बट आई एम नॉट श्योर कि ये इतना एफिशिएंट होगा या नहीं होगा, या इफ आई बी एबल टू एक्सट्रैक्ट efficient embeddings from it, basically. Okay, so these are the hyper parameters. Go through this website, try to understand ये क्या क्या लेयर्स हैं, मैं क्या बात कर रहा हूं, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. तो ट्राई टू वर्क ऑन इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड CNN थ्रू इट. मैंने जितना भी CNN पढ़ा है, either it was for my class, either it was for my interview, I've done that from this. Because see, the amount of visualization it provides you, it's really amazing and it helps you understand कि deep down मेरी गाड़ी में चल क्या रहा है, मेरे CNN में हो क्या रहा है एग्जैक्टली. ओके. तो पहली लेयर की हमने बात करी थी, दैट वाज आवर इनपुट लेयर, दिस पर्टिकुलर लेयर. फिर हमने CNN की बात करी. अब यहाँ पे तो एक और लेयर है, दैट इज कॉल्ड रेलू. इट्स एन एक्टिवेशन फंक्शन. ठीक है. अब रेलू करता क्या है यार? ठीक है, रेलू के बारे में समझते हैं. सी, रेलू इज एन एक्टिवेशन फंक्शन. ये किसी भी नोड को बताता है इफ यू विल बी एक्टिव और इनएक्टिव. एक्टिव और इनएक्टिव से मेरा क्या मतलब है? ठीक है, विल सी दैट थ्रू द विजुअलाइजेशन. जस्ट okay, so we are here. Okay, no down. Okay, wait. All right, so let's see this for once. See,
रेलू रेलू वर्क्स ऑन अ बेसिस, रेलू इज एन एक्टिवेशन फंक्शन जो किसी भी एक न्यूरॉन को या किसी भी एक नंबर को पता क्या बोलेगा कि भाई अगर तू नेगेटिव है ना तो आई विल असाइन यू जीरो। ये मैक्स ढूंढेगा बिटवीन जीरो एंड द पॉजिटिव और द नंबर दैट यू हैव। अगर वो तुम्हारा नंबर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली उस नंबर को जीरो असाइन कर दिया जाएगा। अगर वो नंबर कहीं पे भी यहाँ पॉजिटिव होता है, लेट्स से सी दिस इज द इंस्टेंस, मेरे पास ये 0.9 एक नंबर है, ठीक है, जो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसको मैं असाइन कर दूंगा कि हाँ यू कैन गो, यू आर एक्टिवेटेड। सो दिस एक्टिवेशन फंक्शन डज एंटायरली फॉर दैट फॉर यू, इट एक्टिवेट्स योर नोड्स, इट एक्टिवेट्स योर इनपुट, ठीक है। कौन सा नोड एक्टिवेट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन यू आर यूजिंग। एंड इस प्रोसेस का मतलब क्या है, रीजन क्या है, हम यूज ही क्यों करते हैं, टू एड सम सॉर्ट ऑफ नॉन लिनियरिटी टू योर डेटा। हम कभी भी अगर रियल डेटा देखेंगे ना तो रियल डेटा हैप्पी हैप्पी डेटा नहीं होता है। रियल डेटा एक आइडियल डेटा नहीं होता है जहां पे रूम टेम्परेचर सही रहेगा या कमरे की कंडीशंस या टेम्परेचर या वाटर टेम्परेचर एक आइडियल टेम्परेचर पे रहेंगी, आइडियल प्रेशर पे रहेंगी। दिस इज नॉट दैट। रियल डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो अगर हम कुछ नॉन लिनियरिटी नहीं ऐड करेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू गैदर some variety of features, some variety of learnable parameters. So that's why it's very important कि हम एक्टिवेशन फंक्शंस का यूज करें टू एड सम सॉर्ट ऑफ नॉन लिनियरिटी टू योर नेटवर्क, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ सी लर्नेबल पैरामीटर्स हैं, तो ये पैरामीटर्स या एजेस हैं, ये मुझे एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू ही पता चल रही हैं। यहाँ पे भी अगर हम देख सकें तो ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, okay, so let's take a good example. Hmm, yeah, so let's take this. अब यहाँ पे अगर मैं ये चीज कर रहा हूँ, so most of the numbers, अगर इसको मैं एजेस के थ्रू या अपनी आइज के थ्रू भी पता करने की कोशिश करूं तो मुझे एक आइडिया लग रहा है ना कि हाँ यार दिस स्ट्रक्चर ना लुक्स लाइक अ बोट, ठीक है, ये बोट की तरह मुझे एक स्ट्रक्चर लग रहा है। बट हाँ ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ ये बोट की तरह एक कोई स्ट्रक्चर होगा, बट समझ नहीं आ रहा है क्या। बट हाँ एक एजेस के थ्रू या फीचर्स के थ्रू अगर मैं पता करूँ ये क्या है, तो एक बोट लग रही है। So Relu does that for you. It introduces non-linearity to your network to make it a bit more complex, to make it a more bit learnable, I'd say. Okay. So that is what entirely this is. And also we have a max pooling layer. तो अब क्या होता है कि मैक्स पूलिंग हम क्यों डालते हैं, सी मैक्स पूलिंग के नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है। सी यहाँ पे अगर हम इस पार्ट पे देखेंगे, हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, हम इसमें से मैक्स नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो पास ऑन कर रहे हैं कहाँ पे, हमारे नेक्स्ट आउटपुट में। दैट विल बी अ 13x13 का मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रोसेस इंटायरली चलता रहता है और हमें पता चलता रहता है कि हाँ अच्छा ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ठीक है। वी आर वर्किंग विद दैट। बेसिकली मैक्स पूलिंग क्यों यूज की जाती है, हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आई है 26x26 की, इसका एक कॉम्प्रेस वर्जन निकालने के लिए, इसका एक ऐसा वर्जन निकालने के लिए जो बहुत एक कॉम्प्लेक्स वर्जन हो और एक बहुत आई से एग्रीगेटेड वर्जन हो ऑफ आर फीचर्स। ऑल्सो इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द डायमेंशनैलिटी फैक्टर। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हेल्प करता है ताकि हमारा ट्रेनिंग टाइम फास्ट हो सके और कंप्यूटेशनल एफिशिएंट हो सके, ठीक है। सो यू गाइस कैन लर्न मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी मैंने बहुत कुछ कवर नहीं करा है इस टॉपिक पे, ठीक है, because there's a lot to cover. As I said, there's a lot of ground to cover in this. You can learn more about it going to this site, how CNN works, multiple types of operations are there, and multiple types of activation functions are there that you can use. All right. So I hope this was clear. कि how do CNN work and what's making them tick. कि हमारे let's say कार के अंदर जो इंजन है वर्क कैसे कर रहा है, फीचर्स आ कहां से रहे हैं और उन फीचर्स का हम यूज कैसे कर रहे हैं, और मल्टीपल लेयर्स क्या होती है। तो लेट्स गो ओवर दिस अगेन। एक हमारे सीएनएन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या, इनपुट लेयर होती है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है, थर्ड इज रेलू होता है, रेलू इज आवर एक्टिवेशन फंक्शन, फोर्थ इज मैक्स पूलिंग। इन सारे कंपोनेंट्स को मल्टीपल टाइम्स हम यूज करेंगे तो एक कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक बनता है, और मल्टीपल ब्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी आर्किटेक्चर में। अभी हमने ये जिसका एग्जांपल देखा ये बीजीजी 19 का आर्किटेक्चर था,
That is how your CNN work, and that's how these components try to extract maximum jitna bhi information they could from an image for your training purpose. Okay, so अब हमें ये देखना है कि CNN लर्न क्या करते हैं. हमने ये तो देख लिया कि CNN वर्क कैसे करता है. नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि CNN लर्न करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, CNN क्यों डिजाइन किए गए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज they try to understand representation, something features from your input data, representation of features, कि वो features को कैसे present किया गया है. That is why हम grid data के साथ इसलिए work करते हैं, because it has a hierarchical end to it, or it has a hierarchical dimension to it. Okay, so see this is a cat and dog image. अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो हमें बहुत अजीब सा लगेगा, पता नहीं चलेगा क्या है, बट इट लो लेवल फीचर्स. तो हायरार्की की अगर हम बात करें तो सीएनएन की कुछ, अगर जब हमारे बहुत मॉडल जो है हमारे पास बहुत कस्टम मॉडल जो बनाए गए हैं, VGG19, एलेक्स नेट या फिर मोबाइल नेट, दीज आर ऑल द काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट वी कैन यूज. तो अगर हम इनकी बात करें तो ये होते क्या है. फर्स्ट इज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लो लेवल फीचर्स. सो जो स्टार्टिंग की लेयर्स होती है ना हमारे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स की, दे ट्राई टू डिटेक्ट लो लेवल फीचर्स. लो लेवल फीचर्स क्या, एजेस, टेक्सचर, पैटर्न्स, सिंपल चीजें जो नहीं होती, जो वेरी लो लेवल फीचर्स दैट आर वेरी कॉमन टू एवरीवन. अगर मैं एक डॉग की भी बात करूं और एक ह्यूमन की भी बात करूं तो हमारे लो लेवल फीचर्स क्या है, हमारा टेक्सचर, हमारा फेस का शेप, राइट, एंड द एजेस आर फेस हैव, these are very simple patterns. And what are our high level and are very indicative of specific patterns or objects that you're trying to work with. ये बहुत कुछ कंटेन कर सकते हैं. हाई लेवल फीचर्स बेसिकली हमारी फेस की सिमेट्री को कंटेन कर सकते हैं. हाई लेवल फीचर्स हमारे फेस की नाक को कंटेन कर सकते हैं. ये पता कर सकते हैं कि हमारी नाक कहाँ लोकेटेड है, स्पेशली कहाँ पे है, हमारी आईज कहाँ पे है. सो दीज आर आर हाई लेवल फीचर्स दैट दे लर्न. ठीक है, सो एक बहुत हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स की, दैट दे अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्रिड डेटा. ओके, मूविंग ऑन. अब यार एप्लीकेशंस की बात करते हैं. हमने बहुत पढ़ लिया सीएनएन क्या होता है, सीएनएन के बारे में समझ लिया, सीएनएन इमेज डेटा के साथ कैसे काम करता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसमें. ओके, सो वंस मोर आई एम सेइंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can write out you can write those out in the chat because I want you. अभी तक we have learned a lot of things, right? We have learned a lot of things. अगर कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही है ना guys, उसको आप चैट पे मैसेज कर सकते हो. We'll take those up and we'll move forward. Okay, if not then we'll move forward. Applications क्या क्या होती है. ठीक, टेस्ला के बारे में पता है, ऑटोनॉमस व्हीकल है, कैसे वर्क कर रहा है. कैमरा के थ्रू इनपुट आता है एंड वी आर एबल टू टेल कि हाँ अभी रेड लाइट है, अभी गाड़ी मूव नहीं कर सकती. ठीक है, जगह खाली है, लेन खाली है, हम लोग गाड़ी की स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं. ऑटोनॉमस व्हीकल्स, टेस्ला जो है हमारा कंपनी, जो टेस्ला है, राइट, it's majorly dependent on your CNN. It's majorly dependent on your cameras के थ्रू जो भी इमेज हमारे पास आ रही है रियल टाइम में, it works on that and it tells the sensor of your car, yeah, you can increase your speed right now, you have to stop, अभी रेड लाइट है, अभी मूव नहीं कर सकते, सामने हमारे लोग चल रहे हैं, बी केयरफुल, मूव अराउंड इट, सी दीज काइंड ऑफ थिंग. सेकेंड इज योर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. योलो के बारे में सबने सुना, ठीक है. अच्छा योलो छोड़ो, मैं तुम्हें सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ कैमरा का, तुम्हारे फोन का. जब भी तुम एक फोटो खींच रहे होते हो तो आंसर बॉक्स बना नहीं आता, तो तुम्हारे चेहरे के बन के आता है ना, दैट हेल्प्स यू ट्रैक योर फेस अ बिट बेटर. तो ये कैसे होता है, दैट इज एसेंशियली व्हाट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज. ठीक है, एंकर बॉक्स आ रहा है तुम्हारे फेस के अराउंड, तो तुम्हारा कैमरा बता पा रहा है कि हाँ ये एंकर बॉक्स के अंदर ना एक चेहरा है, एक एंकर. उसको कैसे बताओ कि इट्स ऑल अबाउट सीएनएन. तुम्हारे कैमरा में भी सीएनएन इंटीग्रेटेड है या एक स्मॉल सी एल्गोरिथम इंटीग्रेटेड है
जो वर्क इसी इसी क्राइटेरिया पे इमेज रिग्रेशन. व्हाट इज इमेज रिग्रेशन? इमेज रिग्रेशन इज नथिंग. लेट्स से मेरे पास बहुत सारी फोटोज हैं. तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, दादा दादी, तुम हो, पापा मम्मी हैं. सबके फेशियल फीचर्स अलग अलग हैं और सबके साथ एक एज एसोसिएटेड है. जैसे जैसे एज बढ़ रही है वो फेशियल फीचर्स चेंज होते रहते हैं, तुम्हारा फेस चेंज होता रहता है. दैट इज व्हाट इमेज रिग्रेशन इज. राइट, आई कैन ट्रेन अ मॉडल ऑन इट. मैं किसी का भी फेस कैप्चर करके बता सकता हूँ उसकी एज क्या है. राइट, एक एक प्लॉजिबल नंबर दे सकता हूँ कि हाँ इसकी एज तो यही होगी. दैट इज व्हाट इमेज रिग्रेशन इज. ओके, समझ आ रहा है? इमेज क्लासिफिकेशन, स्टाइल ट्रांसफर, इमेज सिंथेसिस, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. लाइक यू कैन गूगल अ लॉट ऑफ इट. ये तो मैंने मेंशन बहुत कम करी है. बट सी, एज आई सेड, वी हैव अ टाइम कर सकता था, मैंने इसमें करा है. बट सी, ट्राई टू एक्सप्लोर दिस ऑल बाय योरसेल्फ. कोई सर्टेन पाइपलाइन नहीं होती, कोई सर्टेन रोड मैप नहीं होता किसी भी टेक्स्ट ट्रैक को लर्न करने के लिए. उसके बारे में समझना है, कोई भी एक रैंडम वीडियो खोल लो उससे रिलेटेड, कोई भी एक रैंडम प्रोजेक्ट खोल लो उससे रिलेटेड. स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा बट धीरे धीरे करते रहोगे, समझते रहोगे तो एक चीज समझ आएगी, एक चीज घुसेगी दिमाग में. विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाँ व्हाट वी आर वर्किंग विद. ठीक है. अब इतनी सारी कंपनीज के मैंने नाम बताए थे. ठीक है, जीपीटी, डाली, स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी, सिंथेसिया, ये सारी कंपनी सीएनएन का यूज करती है. सारी कंपनी कंप्यूटर विजन का यूज करती है. सारी कंपनी न्यूरल नेटवर्क का यूज करती है. तो इफ यू आर एबल टू वर्क विद दिस ऑन अ गुड लेवल, ठीक है, यू कैन गेट अ जॉब इन. तुम एक जॉब फैक्टर से भी सोच सकते हो कि मशीन लर्निंग, हाउ मशीन लर्निंग इज चेंजिंग द वर्ल्ड. ठीक, टेक्स्ट टू इमेज बनाना इट्स अ मल्टी मॉडल सिस्टम. ठीक है, मल्टी मॉडल इज व्हाट, मल्टीपल मॉडल्स हैं इसमें जो एक टेक्स्ट को एनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये एम्बेडिंग किस इमेज को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, कैट की एम्बेडिंग अलग होती है, गुड डॉग की एम्बेडिंग अलग होती है, जिससे हमें समझ आता है, पढ़ते हैं, पता चलता है. ठीक, चैट जीपीटी का मैंने नाम इसमें क्यों इंक्लूड किया हुआ है? अब तुम लोग बोलोगे यार वो तो एलएलएम है, हम तो उसको टेक्स्ट टू टेक्स्ट बात करते हैं. नहीं, जो नया वर्जन जीपीटी 4.0 आया है, अगर हम उसको इमेज भी पास ऑन करें तो वो प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकता है कि फेशियल फीचर पे किस जगह पे वो क्या रखा हुआ है. क्या मैंने उसको लेट से आई पास्ड एन इमेज ऑफ टू फ्रेंड्स हैंगिंग आउट ऑफ प्लेइंग फुटबॉल. प्रॉपरली वो बता सकता है कि फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, क्या कहाँ खेल रहे हैं फुटबॉल, कौन सा स्पोर्ट खेल रहे हैं, कौन लोग हैं. So GPT 4.0 is capable of that, right? 4.0 have a major update onto it. Try it out if you could. Yeah. So the major part. Any questions till now? Okay. We have concluded the PPT. We have talked about major of the components that a CNN use, a neural network use. So any questions you have right now? Any of those? We are open to Q&A right now. If you have any questions, you can open your mic, ask those questions, and we would love that. Yeah. We will wait for 5 minutes for the all the participants. If you have any questions, feel free to ask. Like I had one request to Kuwar sir. Like sir, if you have any resources using which the people can get started either with learning CNNs or ML Yeah. or any significant resources or platform where they can kickstart their journeys, because I feel many of Mhm. them are the beginners here. It will be great Yeah. if you share those learning resources with us in the chat section. I would really like to explain you one thing. Okay, so one resource that I would do share is this CNN explainer that we were working with. But as I said, see, there's no specific roadmap. मैं एक चीज बहुत मेंशन करूंगा. सी, यूट्यूब सब जानते हैं, राइट? यूट्यूब सब पढ़ते हैं, यूट्यूब से सारे डीएसए पढ़ते हैं, यूट्यूब से सारे वेब डेव पढ़ते हैं, राइट? यूट्यूब पे जाओ, कोई भी टॉपिक सर्च कर लो, उसके दो तीन वीडियोस उठाओ, उसको पढ़ो. बट या, एज यू सेड,
to start from it, to learn from it? See, uh, on Udemy, there are some beginner courses that you could take, or in Coursera, there are some beginner courses that you can take and try to understand that what is machine learning all about. And one more thing, in the post that you have seen, or in whatever the messages that this GDSC club has shared, it has my LinkedIn ID. Whatever the problem you face in any of the context in machine learning, you can message me. We can solve it together. I have had my shares of failures in this particular experimentation site. I've learned a lot from it, and I'm still learning. As I said, machine learning is a very vast field, so I'm still learning. I'm trying to grasp anything out there. Since right now LLM का ट्रेंड इतना चल रहा है, तो मैं LLM के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं LLM के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. So I'm trying to do that. ठीक है. So one thing I would really say is try. Just try to do anything. जैसे मैंने कहा, फ्लास्क समझना है. ठीक है. फ्लास्क इज अ बैकएंड फ्रेमवर्क फॉर पाइथन. फ्लास्क समझने कोई दिक्कत नहीं है. यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो 4-5, एक प्रोजेक्ट उठाओ, उसको रेप्लिकेट करो, समझो, आ जाएगा. पढ़ने लग जाओगे, पता चल जाएगा, दिमाग दिमाग में समझ आएगा कि अच्छा ऐसे वर्क करता है. 2-3 बारी फिर ट्राई करोगे, यू विल एबल टू गेट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग. ठीक है. बट टू टॉक अबाउट इनिशियल रिसोर्सेज. Okay, so one thing, there are some channels that I would like to refer. Okay, is it okay if I write their names in the chat? Yeah, it works fine. Would be perfect. Sure. So one channel is this three blue, one brown. This guy is amazing. Okay, and he explained all this stuff from a very trivial manner, from a very beginner's perspective. He tries to make them understand how things are working, and how one should learn more about machine learning, right? And to talk more about it, I would say, see, you have all heard of Krish Naik, right? So Krish Naik is a wonderful guy. If you're trying to understand some sort of machine learning concept in a simpler language or in a simple format, right? He explains a lot of stuff in a very trivial manner. Even मैंने भी जब अपनी machine learning and deep learning की journey start की थी, I started from there. I worked my on many of the projects. He has guided me, not personally, but through his videos. Okay, so yeah, I think that would be all from my side. If you don't have any questions, then it's okay. Don't worry about it. See, आप जब भी किसी नए टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जब भी किसी नए टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हो, you guys will take time, and that is very okay. That's okay. You're trying to explore something, but don't give up on it. Just try to learn more about it. Try to talk to some people. You have your seniors. You have a lot of resources. You have a lot of free resources as well. I'll tell you one very interesting fact. मैंने जितनी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सीखी है ना, आई हैवंट स्पेंट वन वन रुपी ऑन इट. मैंने यूट्यूब से इतना सीखा, मैंने रिसर्च पेपर से इतना सीखा है, मैंने मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ के इतना सीखा है. ठीक है. और मैं अभी भी सीख रहा हूँ. एज आई सेड, आई एम स्टिल लर्निंग. सो ट्राई टू एक्सप्लोर दिस फील्ड, ट्राई टू वर्क ऑन इट. एंड मैंने अभी जितना भी पढ़ाया है CNN के बारे में, जितना भी समझाने की कोशिश करी है, सी दिस इज वेरी बेसिक. This is very I would say this is very compressed version of what I was trying to make you understand. So go out and try to understand, try to make this come alive through your own projects. I would say that. I would preach that as well. So yeah, if you guys don't have any questions, then you guys were wonderful, and I had really great time taking this session. All right. Thank you so much, sir. It was indeed a very insightful and very engaging session. Like, we came across this very interesting topic for the very first time, and yeah, thanks to you. You made it pretty interesting, and we literally loved the presentation, the way you blended all those memes and all those information, and also the resources Yeah. that you provided
are truly immense, and we would make sure that all the attendees and all the non-attendees as well who are very passionate about getting into the world of ML, they get those resources. Now it's time for vote of thanks, since we don't have any questions in the chat section. As we conclude this incredible journey to the neural frontiers, I want to express our deepest gratitude to Mr. Kuwar Kapoor for sharing his expertise and insights. Your passion for the subject has undoubtedly left us enlightened and inspired, sir. Will you Yeah, please? thanks a lot for having me. Before we conclude, I would also like to thank all the GDSCs who made this collaboration possible. Thanks to all the GDSCs right here. And we also, looking forward for future collaborations as well. I hope all of you are here. You can please turn on your videos. And yeah, if you have something to say, I would love to hand it over to you. GDSC IIMT, someone from GDSC ABS IT team, GDSC of Purnima College of Engineering, Asansol Engineering College, Dr. B.C. Roy Engineering College, Durgapur, and KPR Institute of Engineering and Technology. All right. Now, before we conclude the session, I know people must be having some other work to do as well. So, can we please turn on our videos and have a quick picture? Since it's a virtual event, so the screenshots are the only saviors that we have for today. Everyone, I would request all the collaborative GDSCs and the core team members to please turn on their videos. Also, all the attendees are requested. Let's make this session memorable. Yeah, let me know when your people are ready. Please turn on your videos. Okay. All right. So I'm just clicking the screenshots. So it would have been great if you could also join us with this little photo session that we're having virtually. Yeah, sure. Just give me a moment. Okay, sure. Uh, okay. Uh, yeah. So my picture visible? Uh, not sure about it. Yeah, Yeah. hey, hi everyone. All right. Can we make a thumbs up or something? All right, I just clicked the pictures. Thank you so much, everyone, for joining in. And yeah, happy Makar Sankranti to all of you. I really appreciate your passion towards learning machine learning. And yeah, thanks to you, sir, for making this session very engaging and very interesting. We look forward to to your guidance and your mentorship in our future events as well. All the GDSCs are really grateful for the learning experience you provided. Also, huge thanks from GDS RCSW to all the lovely collaborating GDSCs for their support. And yeah, see you all, people. Thank you so much for joining in. Make sure you participate in the solutions challenge as well, because this ML event is also a part of it.